कैसे हम हील हो सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। Meditation and medication, they're so deeply connected, these two words. Because medication, we are taking medicines from outside, right? All the chemicals, whatever that antibiotics, painkillers, anything that we take as a chemicals from outside, it is not really natural. Okay, yeah, little bit high. Indians have short legs. I have short legs. I can feel the rest of. Wow, very good. वेलकम बैक स्वानुभव में। अक्सर लोग के मन में मेडिटेशन से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। मेडिटेशन बुड्ढों के करने की चीज़ है या मेडिटेशन एक एस्केप है। मेडिटेशन से हीलिंग नहीं होता है। मेडिटेशन तो सिर्फ जिनके पास टाइम नहीं है ना, वही लोग करते हैं। अक्सर मेडिटेशन से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से कि मेडिटेशन के पीछे का साइंस क्या है और जो हम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है उसको कैसे तोड़ें, जो लाइफ हम क्रिएट करना चाहते हैं हम क्रिएट कर सकें। तो चलते हैं स्वानुभव के इस एपिसोड में। Welcome back. Thank you. We have seen you always on TV and right now we're sitting, हम साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। तो हर एक बंदा जो मेडिकल साइंस को जानता है, अगर किसी को लगी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट, वो उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस पे बहुत कम लोग, बात ही नहीं होती है हमारे एकेडमिक फील्ड में या इवन मेडिकल फील्ड में। एनर्जी साइंस, कॉन्शियसनेस के बारे में बात नहीं होती है। तो आपने जैसे ध्यान की शुरुआत की थी, मेडिटेशन को एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आप जानते हैं मेडिकल फील्ड में क्या लिमिटेशंस है, क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल साइंस में क्या हीलिंग जो हमें चाहिए, जो एक दवाई दे सकता है, वो चीज़ वर्सेस एक मेडिटेशन साइंस क्या है, कैसे हम हील हो सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। That's a very, very beautiful question, Amulya ji. Because meditation and medication, they're so deeply connected, these two words. Because medication, we are taking medicines from outside, right? All the chemicals, whatever that antibiotics, painkillers, all that chemotherapeutic agents that we have, it's an external dependency. It's not that it is wrong, but anything that we take as a chemicals from outside, it is not really natural. Our body resists it. So there are side effects, there are complications. Now we can see around the globe how much, many people, they fear illnesses, diseases, and any pandemic times, we have witnessed during 2019, 20, 21, 22, the pandemic times, all the pharmaceutical industries, how much they were trying to create painkillers to antibiotics to many, many medicines. Still people are not got cured. The pandemic has taken its own toll and many lives went away. And definitely there is a role, no doubt about the role of medical science, but it's a very, very, very minimal. Means emergencies, we need to take support, but we need to adapt to the natural way of self-healing through meditation. Meditation is the primary modality of self-healing, because we don't need to
invest any of our money, and we know we don't need to go out and to somewhere else to seek some kind of help, support, but we can actually resort to our own the resources inside. We can go within to find the inner resources to heal ourselves, to cure ourselves. So meditation itself is the great medical science itself. Spiritual science and medical science are not different. Somewhere they support each other. Spiritual science, it has got integral, it as an integral part of it is medical science. Means there is a pharmaceutical industry existing inside our body. Our body produces so many chemicals, so many neuropeptides, endorphins, enkephalins. Whenever we are sitting in meditation, our brain wave pattern is changing from the very stressful beta state to alpha state, alpha to theta and delta, gamma states. Our brainwave pattern is changing, and instantaneously our body is producing some neurotransmitters which are going to relieve us from pain and also relax our body muscles. And a beautiful kind of what is called as parasympathetic nervous system which gets activated. Otherwise, in the active life, when we are going through some kind of life situations, there's so much stress. That stress, immediately our sympathetic nervous system is going to be aroused, is going to be alerted. That's why our muscles get tensed, our blood pressure shoots up, our blood sugar also goes high, and there's so many physiological changes that occurs. But during meditation, there's a deepest relaxation. The first thing that happens is relaxation. Our muscles relaxes, our breath slows down, our heart rate slows down, our brainwave pattern is changing, and also your whole physiology is changing. For example, your body temperature is slowing down. It also lowers. Your metabolism is slowing down. It is very well researched by medical science, and all the physiological changes were noticed by spiritual scientists, because all the meditators were wired through electrodes to record what are the changes occurring in them when they are meditating. What are the changes happening inside their body? So before meditation and after meditation. So after meditation, when they take the blood sample, all the changes we can notice. That's how it is validated across the globe that the power of meditation, the healing power of meditation. So I can say that meditation is medicinal. तो आपने ये भी कहा है कि मेडिसिन, तो आपने ये भी कहा है तो मेडिटेशन आने पर जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी. तो क्या मेडिटेशन में इतना पावर है कि आपको योगा की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की भी ज़रूरत नहीं है थ्रू मेडिसिन्स? क्या होता है हमारे अंदर और गहराई से जानना चाहूँगी. एक्चुअली हम सबको ये मानना है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक, 90%. तो हर एक जो इलनेस है उसका एक मूल कारण है. ज़्यादा तक हम क्या करते हैं, बाहर से एक मेडिसिन लेते हैं और टेम्पररीली वी फील गुड, बट एक्चुअली वी आर नॉट. हम जो मूल कारण है उस मूल कारण को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं. तो जो भी है वो जो साइकोसोमैटिक, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड. जो आप साइकोसोमैटिक आप कह रहे हैं कि अगर मुझे कैंसर है तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपना कैंसर क्रिएट किया है. जरूर.
अच्छा, ज़रूर, क्योंकि जो भी डिसीज़ है वो हमारा जो थॉट फॉर्म है उस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे शुरू होता है. एज मेडिकल डॉक्टर मैं जानना चाहूँगी कि जो ऐसे ऐसे डिजीज़ हैं जो बोलते हैं कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इनक्योरेबल है, क्या आपने ऐसे कुछ देखा है कि ध्यान के द्वारा ये ऐसे प्रॉब्लम्स भी हील हुए हैं? कोई Yes. आप बता सकते हैं केस स्टडीज? Yeah. There are many such cases, such incidents that reported by feedback given by many meditators. Many think that, oh, I have sickness, I can't meditate. Actually, meditation is for everyone. Those who are healthy need to practice meditation, and those who are sick also need to practice meditation. बट जब आप सिक होते हो आपके पास एक तो खुद ही थॉट्स तो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. Correct. What happens is when they do this sadhana, like watching the breath, श्वास के ऊपर ध्यान रखकर अंतर्यान करते हैं समय, क्या होता है, their consciousness actually directs them to learn some lessons from the illness. Why the illness has manifested in the body. In meditation, they will be revealed by their own chaitanya, their own consciousness. Because our consciousness strive to be always to make us complete and whole and always be well. That's the aim of our consciousness. It always tries to do that. So in meditation, it happens so naturally. We're just sitting down and we're trying to watch our breath. Initially, there is a struggle. Our mind is wandering here and there. We bring the mind back to watching the breath. So we focus here on our normal, natural breathing. So what happens is once we reach to that no thought, no mind state, in that moment, our attention is going towards learning the lessons of why this illness has manifested, why we are clinging to some emotions which are coming from the past, which are belonging to the past. Many emotions are not related to this current moment, present moment, but they belong to the past. But we are clinging to them because there's something that still unfinished from the past. So our consciousness directs our attention to there. So we uncling and finish the story. It happens very naturally in meditation. So ध्यान जो है, ध्यान में हम हमारा जो मूल चैतन्य है उस चैतन्य से हम जुड़ जाते हैं और जो भी हमारा अंदर है वो हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दिस केस स्टडी अबाउट a lady who came to us and उनका thyroid problem था. And you know, nowadays many people have this thyroid issues, thyroid problems, and thyroid also is connected to our expression, this organ. So वो जब छोटी बच्ची थी and the parents were very dominating, never allowing the child to express herself. अगर उनका व्यू सुनना है या उनका जो भी इमोशंस के बारे में या वो जो कुछ भी कहना चाहती है वो लोग नहीं अलाउ करते थे. सो यू नो ऑल द एक्सप्रेशन वाज ब्लॉक्ड फॉर हर. एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड. शी वांट टू शेयर, कुछ शेयर करना चाहती है, कोई नहीं सुनते हैं, अलाव नहीं करते हैं. सो ऐसा करते हुए जब उनका मैरिज हुआ, शादी हो गया, शादी के बाद भी सही सेम स्टोरी, वही स्टोरी. तो लेटर इट जस्ट बिकेम लाइक इट जस्ट मैनिफेस्टेड लाइक ए थायराइड प्रॉब्लम. एंड जब वो जो मूल कारण है वो समझ पाई कि ये मेरा एक्सप्रेशन जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है, तो she could work on herself and then she started expressing herself. जो भी उनका व्यूज़ है, जो भी उनका आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस करने लगी and then she could come out of that thyroid problem. So like that every disease, हर एक डिसीज़ का एक मूल कारण होता है. एंड जब वो हम देख सकेंगे, जान सकेंगे, we can work on that.
Otherwise, if we have only body consciousness, then we are only physical beings. इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं, वो जो चैतन्य है हमारा, उस मूल चैतन्य से हम जुड़ जाते हैं और वहाँ से हम सब जो कुछ गाइडेंस हमें चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है. तो ये जो एक तो है जो दिखता है अभी आसपास में, अगर हम देखें तो वी बिलीव ओनली व्हाट वी सी. Until we see, we feel, we touch, we only then believe something. So आप जो कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे पावर पे बिलीव, क्योंकि जब आप ऐसे स्थिति में होते हो आप वल्नरेबल होते हो. हम कैसे इस स्पिरिचुअल साइंस पे बिलीव करना शुरू करें जब वो दिखेगा ही नहीं. आप देख नहीं सकते, सांसों को आप फील कर सकते हो, लेकिन आप किसी और को, वो जो थॉट्स है, हम उस थॉट्स के वेब से बाहर ही नहीं आ पाते हैं. तो कैसे हम ध्यान, एक फर्स्ट स्टेप ले ध्यान के लिए? See, you can't see certain things because it's beyond your physical perception. But जो भी हो रहा है आपके साथ, अगर आपका जो थायराइड प्रॉब्लम है वो अगर आप हील करे तो what else you want? That itself is a proof that something is beyond your just the physical perception and the mental perceptions. And when you could connect there, अगर आप वहाँ पे उस मूल चैतन्य को आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो और अपने आप को इस फिजिकल प्लेन में जो भी है, you are able to heal yourself, that itself is a wonderful thing. So you don't have control. मतलब in general अगर हमने सब कुछ सही किया है अपने लाइफ में, बट तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? तो हम यू हैव टू फाइंड द मूल कारण को जानना चाहिए. एंड समटाइम्स मेडिटेशन में लोग जब आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दे हील देमसेल्व्स. बट समटाइम्स हमने ये भी देखा है कि जब मेडिटेशन में आने के बाद कुछ डिसीज आ जाता है, तो देन लोग ऐसे मानते हैं मैंने मेडिटेशन में आने के बाद मुझे ये सब हुआ तो मेडिटेशन गलत है, मुझे मेडिटेशन नहीं करना है. ये भी गलत है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में आते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ जो भी है हमारे अंदर, उसके बारे में हम जानकारी पाते हैं. we start feeling, we start becoming aware of that. That means जब आप meditation करते हो तभी आप अपने आप के बारे में जान रहे हो. Then you know that I have this in me. इसके पहले तो आपको उतना awareness नहीं था, लेकिन ध्यान में आने के बाद ही आपको ये awareness हुआ कि मेरा thoughts ऐसे है, मेरे emotions ऐसे है. So it's very easy for you to identify and to work on that and अपने आप को आप heal कर सकते. बट मेडिटेशन को बहुत लोग, क्योंकि अपने इस रियलिटी से बाहर जाने का जो मज़ा है, क्योंकि हम अक्सर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं. ऐसे पॉसिबल है कि प्रॉब्ली आपके फैमिली में किसी ने बॉडी वेकेट किया है, किसी का डेथ हुआ है, या आपके आसपास लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बहुत बार मेडिटेशन को एक एस्केप रूट के लिए लिया जाता है. Exactly. तो क्या ये सही है? क्योंकि बहुत लोग लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करें कि भाई मेडिटेशन मत करो, कौन से वर्ल्ड में जा रहे हो, डॉक्टर बनना है, कुछ बड़ा बनना है लाइफ में, तो थोड़ा उस पर फोकस करो. ये सब मेडिटेशन सब ना बड़े उम्र में कर सकते हैं. That's so true. Many think that meditation is like a path of renouncing the world, and that's why this habit of escaping from the problems. Whenever there's a problem, escape, move away from negative things. But we can't move away any suffering, any negative things, because they keep coming back. Because this is a duality world of duality, where good, bad, both exist here. Right and wrongs will be there. Day and night will be there. If you do not like the night times, but still night time comes, and suffering comes, pain comes, and there will be people who also will be violent. We have to encounter that. But this concept, this notion, this myth that spirituality means
escape is not right. The right understanding, spiritual science says that spirituality means embracing the reality as it is, good, bad, and everything as it is. For example, you talked about the death. When the death happens, definitely it shakes everyone. Even though someone is having this understanding that soul has vacated the body, it's not really the death. There is no death. Death is a fiction. And still, there is a grief that comes. It's okay to grieve. Even spirituality doesn't mean that we become emotionless, no emotions. Emotions are the very juiciness of life. We need to express our emotion. Crying, lacrimal glands will be expressing. It's so beautiful to have these tears and also express all that grief. And when the grief is dealt with, naturally we move to a greater levels of acceptance of death of the beloved ones. And there's no repression or suppression of these emotions. Otherwise, so many times we don't agree to the destiny of someone who left the body. So in the dream reality, in the dream plane, we constantly feel that this person is still there with me because we're still clinging to that person, the persona, not the soul. But the soul is already happy. Anybody who ever leaving the body, they are so rejoicing because they completed, they're going back home. They feel so happy actually leaving the body. But only here, when we are here in the physical plane, we feel so much shocked. Spiritual path is telling us to face everything, not escape from that. No escapism, including, for example, youth practicing meditation. There is a tendency that, oh, I don't want to do anything, jobs, I will only practice meditation. And it's not like that. Path of spirituality is nothing but middle path. Madhya marg means walking one foot in the samsara and the foot in the nirvana. Both are very essential. We need to have all kinds of experiences in the material plane as well as spiritual plane. That's how we really become wholesome, complete beings. And it's not away from life. Spirituality is a way of life. या सो मेडिटेशन जो है वो अल्टीमेट है, लेकिन जब भी हम हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दुविधा है, जब हम वो महसूस करते हैं, we try to search for something to just, so that we don't experience that pain. We get into a relationship, हम किसी डेटिंग एप्स में चले जाते हैं, Yeah, हम बाहर की दुनिया में वो जो एक्साइटिंग लगता है, राइट, हम यहाँ नहीं जीना चाहते हैं. एंड समटाइम्स वो जो पेन हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है ताकि वी ट्राई टू फाइंड सोलेस. लाइक फॉर एग्जांपल मे बी कई लोग स्मोक करने शुरू करते हैं, कई लोग ड्रिंक करना शुरू करते हैं, ऐसे ही कई लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं क्योंकि दे जस्ट नीड सम सोलेस, बिकॉज लाइफ में इतना पेन है और उससे बर्बाद करना हो नहीं रहा है. सो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बिकम्स एन एस्केप मैकेनिज्म. अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में चली गई और ऐसा आँख बंद करने लगी, मैं लाइट देखना शुरू करूँगी और इतना शांति, इतना आनंद मैं महसूस करूँगी, तो क्यों वहाँ पे जाना है मुझे? ये अच्छा है. वो लोग मुझे समझते नहीं हैं, वो लोग समझते हैं वो दुनिया तो बुरी है, बहुत बुरी है, बुरा है, और ये अच्छा है. तो इसलिए हम ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इससे हम एक एस्केप मैकेनिज्म भाग जाते हैं. हमारा जो जीवन है, ये जो दुनिया है, उससे हम भाग जाते हैं. लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि हम जिससे भी, किसी से भी जितना भागते हैं वो हमारा पीछा करता है. दैट्स नॉट द वे टू कम आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस. मेडिटेशन तो गलत नहीं है. जो हमने इस पाथ को एस्केप मैकेनिज्म, एस्केप होने के लिए चूज़ किया, वो गलत है.
राइट. सो इंस्टेड हम ये जो प्रॉब्लम है, क्यों है ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में, ये जो रिलेशनशिप इश्यू है क्यों है, मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ ऐसे परिस्थिति को, ये ऐसे लोगों को, जब हम उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत सीखने के लिए मिलेगा. वी आर हियर टू लर्न. व्हाई आर वी हियर? इफ वी वर जस्ट टू बी इन दैट ब्लिसफुल स्टेट, हम यहाँ पे नहीं आते. यहाँ पे क्यों आए हम? पहला रीज़न तो सीखने के लिए, दूसरा रीज़न तो टू एन्जॉय, टू सेलिब्रेट. कब एंजॉय कर सकते हैं हम हमारे जीवन को, कब सेलिब्रेट कर सकते हैं? तब हम ये जो भी है उनसे हम छुटकारा पाए तो हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. सो पहला स्टेप है सीखना. हर सिचुएशन, हर एक व्यक्ति से जो कुछ भी हमें सीखना है, भाग नहीं सकते, क्योंकि भाग नहीं सकते. प्रॉब्ली मदर इन लॉ हो सकता है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका फादर हो सकता है. Right. And one more thing is Bhagwat Geeta is a great the scripture example for how to face the reality, not escape from the reality. Lord Sri Krishna Paramatma, the first Arjuna Vishada Yoga, first Adhyay. So Arjuna was in deep, sadness and anguish, and he wanted to run away from the battlefield. Lord Shri Krishna has guided. No, face the reality. Don't escape. So we have a tendency when there is something negative, we want to move away. For example, there is fire which is burning our hand. We want to withdraw. It's our normal reaction. Anything negative, we want to move away from that place. So, but spirituality tells something different. We have to face that, even the sadness, to any negative thing that's happening. Don't run away from it. You have the enough tools, resources inside. Meditation is the primary resource which makes you connect to your consciousness, your energy, and your wisdom inside. So entire Bhagavad Gita, the teachings of Lord Shri Krishna happened right in the war field. Mahabharata is in the war, in the घर middle में of the नहीं war. हुआ था, Yes. पैलेस में नहीं हुआ था, Not palace, in the Yuddha middle of bhumi the mein. Yuddha bhumi. So it's amazing. It's a great metaphor. It's a symbol that how we need to also learn wisdom, learn in our daily life, not escape from the reality, but even meditation itself is facing the reality. It actually prepares us. It gives us so much energy so that we are courageous enough to face the reality. Come what may, I face it. Yeah. I just want to share this small incident. एक डॉटर इन लॉ आई थी हमारे पास, एंड शी टोल्ड दैट आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई लाइफ. तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में? तो बोली मेरे मदर इन लॉ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो ठीक है, मैंने फॉरगिव कर दिया उन्हें. एंड उन्होंने बोली कि मैं एक बुक में पढ़ी फॉरगिवनेस के बारे में, और मैंने वो सब कुछ कर दिया और मैंने मदर इन लॉ को फॉरगिव कर दिया. तो मैंने पूछा अब क्या प्रॉब्लम है, आपने अगर वो सब कुछ किया तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलने लगी कि जब भी मेरी मदर इन लॉ मेरे सामने आ जाती है, जब तक वो बाहर है तो ठीक हूँ मैं, जब भी वो मेरे सामने आती है, मैं जब उनको देखने लगती हूँ तो आई बॉयल विथ एंगर. तो मैंने पूछा उनसे तो आपने क्या किया, क्या फॉरगिवनेस किया? तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने वो किया, ये किया, लेकिन वो हम नहीं फेस कर पाते हैं जो भी है हमारे अंदर, जो एंगर है, जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, बिकॉज दैट क्लियरली शोज, जो भी वो शेयर कर रही थी, इट्स वेरी क्लियर दैट शी हैज़ नॉट वर्कड ऑन हरसेल्फ. वो सिचुएशन आपको टेस्ट करता है. यूजुअली हमें लगता है कि मैंने ये फॉरगिव कर दिया या मैंने फॉरगेट कर दिया, लेकिन सिचुएशन आता रहता है. एग्जैक्टली. जब आप वो सिचुएशन में हो, आपको पता चल जाता है आपने कितना फॉरगिवनेस आपने कर पाया, कितना नहीं कर पाया. सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़रूरी है. हमारे अंदर जो भी है,
हमें झांक कर देखना चाहिए, समझना चाहिए. एज यूथ क्या होता है कि हम चाहते, मैनिफेस्ट करना चाहते अबंडेंस. हम चाहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, सभी लोग हमसे प्यार करें, कितना फेम मिले, कितना नेम मिले, लेकिन हमारे अंदर वी फील वेरी नेगेटिव. वी वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव रियलिटी. तो कैसे हम अपने इस बिलीफ सिस्टम पर काम करें, क्योंकि हर एक लेवल पर हम अबंडेंस चाहते हैं लेकिन अबंडेंट फील नहीं करते हैं. हम हैप्पीनेस चाहते हैं लेकिन हैप्पी खुद नहीं फील कर पा रहे हैं. तो इवन व्हेन आई लुक एट आउटसाइड, इवन अ लॉट ऑफ हीलर्स, अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे टॉक अबाउट इट बट दे डोंट फील इट. एटलीस्ट व्हेन वी सी, मतलब हम ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा अगर कहें तो ऑन द कैमरा हम देखते हैं कि सभी लोग ऐसे मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, इन सब की बात करते हैं, लेकिन वापस जब हम पीछे ऑफ द कैमरा देखते हैं वो नहीं है. तो क्या ये ह्यूमन इशू है, ह्यूमन प्रॉब्लम है? क्या इससे बाहर हम आ सकते हैं? ज़रूर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी आपको रोक रही है, वो जो सृष्टि आप करना चाहते हैं वो करने से, वो हमारा बिलीफ सिस्टम से. सो क्या बिलीव्स आपको रोक रहे हैं, वो जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं वो न करने से? जैसे मैं एक ऐसे पार्टनर को चाहता हूँ जो एक शाहरुख खान बने, राइट. एक ऐसा पार्टनर जो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा प्यार करे, लेकिन वो जितना भी कहूँ, मैं 40 साल की हो गई हूँ बट मैं नहीं कर पा रही. ऐसे इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं. या सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर आपके चाइल्डहुड में किसी ने आपको बोला यू आर नॉट गुड इनफ, ये तुम नहीं कर सकती, तो अ चाइल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इन दैट. अगर वो आपके माँ बाप के मुंह से आ जाता है, एनी सिचुएशन, बिकॉज चाइल्ड इज़ लाइक ए स्पॉन्ज, वो सब कुछ अंदर ले लेता है. तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती. सो जितना भी आप कोशिश करो, जितना भी आप मेहनत करो, बड़े होने के बाद अगर आपका अंदर ये बिलीफ सिस्टम है तो वही आप मैनिफेस्ट करोगे. अगर ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स आपको इतना अपॉर्चुनिटीज़ देगा, सब कुछ, इवन पैसा भी आएगा आपके पास, अगर आपके अंदर आई डोंट डिज़र्व, इफ़ यू हैव दैट बिलीफ सिस्टम ऑफ आई डोंट डिज़र्व, देन अगर वो जो पैसा आपके पास आएगा भी चला जाएगा, क्योंकि यू डोंट फील आई डिज़र्व दैट. सो इसीलिए वो जो बिलीफ सिस्टम्स है, उस बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. And also, money, sometimes people have a belief that it is anti-spiritual. It is, if I only become very poor person, I must lose money, all that, everything, then I become spiritual. We think that poverty is a great virtue. You become very poor, then you will not have material attachment, then you go into spiritual. It's not that. It's not at all true. The truth is that one can be very, very wealthy, very rich, full of material prosperity. At the same time, they can reach to great spiritual heights. They can be enlightened. Like a Janaka Maharaj, King Janaka, he used to be very, very the wealthiest, richest king. At the same time, greatest spiritual enlightened master. He was an example for everyone. How to be, actually it's not true. Many of the beliefs, we have to examine them, whether they're right. Spiritual science is like a testing. Spiritual science, always we need to have the scientific temperament, test everything, whether it is real or not, whether it's true or not. Any untruth need to be discarded. So, for example, if someone has a lot of money, they can use it for the, creating a spiritual atmosphere, a big spiritual library, a big pyramid meditation center. A big pyramid can be built. How much? These beliefs actually prevent, it stops, it obstructs the flow of money.
Actually, a nation, a country can be so prosperous if everyone has this a different growth mindset, a different mindset where we understand the importance of money, but we don't run after that. What we do is we correct these limiting beliefs. Even subconsciously, we hold so many beliefs, like Dr. Lakshmi told, that I don't deserve, I'm not good enough, and if I have money, it delays my spiritual growth, and the money is very Yeah. hard to get. It won't grow on apple trees, like apple trees, like apples, and all these are very, very rotten and limiting beliefs. So spiritual science eliminates all that, whatever is untruth. And more we understand our consciousness, we know the value inside us. When we know that we are Amulya, means priceless, like just like your name, Amulya ji. So everyone is Amulya, actually. We can't give a price tag to them because we're all primarily consciousness. Then you become a magnet because you deserve, you're so valuable. Many people, they think that they are not so much valuable. They feel that they are very less, and this is what spiritual path, actual spiritual science, meditation shows us, our own inner magnificence. What a great people we are all, living in these flesh bodies, and our own greatness, we don't recognize it. So that's why one need not run towards money, chase money. But what happens is, when you recognize your own inner magnificence, money will chase you, money will run after you, fame and name run after you. People will give all the admiration and love and appreciation to you. We don't need to look for them. Everything comes to you. Like for example, the example you shared, जो उदाहरण आपने दिया कि I want money, but at the same time inside, at a deeper level, if you feel filthy rich, rich people are bad. अगर ये पैसा जो है, पैसा आने से सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं. अगर you have this belief system inside you, how much ever you want, you can't create. Did you understand? There is a conflict inside you. You want, at the same time you don't want. You want it, but at the same time you don't want it. So that is why ये जो conflict है, ये एक belief system ही है. See, money is not bad. पैसा तो गलत नहीं है. इस दुनिया में अगर हमें अच्छे तरफ से जीना है तो पैसा चाहिए. अगर आपको एक क्लास लेने के लिए यूरोप को जाना है, अगर आप एयरलाइंस के पास गए और मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, आप मुझे एक टिकट दे दीजिए, नहीं देंगे वो. सो यू नीड दिस मनी, एंड मनी इज़ न्यूट्रल एनर्जी, एक न्यूट्रल एनर्जी है. जब हम ये जो बिलीफ सिस्टम्स है, ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, जो भी है हम उसको वी रेस्पेक्ट दैट, वी ऑनर ऑल दैट एनर्जी. एंड अगर ये जो पैसा है एक एनलाइटेंड मास्टर के हाथ में है तो कितना सब कुछ हम कर सकते हैं. तो जैसे हमारे जो बिलीव्स हैं, एक तो जैसे आपने कहा चाइल्डहुड से आए हैं, कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने या हमने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे हमारे सोसाइटी जैसे बोलता है, जैसे हम अपने आप के बारे में फील करते हैं, वही हम बिलीव करने लगते हैं कि वही हम हैं. और क्या क्या वेज से हम इस बिलीफ सिस्टम को और डीपली इनग्रेन्ड होने लगता है. क्योंकि हम एज अ चाइल्ड तो हमारे अंदर कोई थॉट्स है नहीं, हमारे अंदर डाला जाता है. तो क्या इसी से ही सारा जो केवल अपने जो बिलीफ सिस्टम्स, बचपन के बिलीफ सिस्टम्स को डील करने से ही क्या सब कुछ हो जाएगा? No. It is also coming from even the womb, fetal memories. When we are inside the womb, when we're growing as a fetus inside the womb, even that time, if the fetus, the child is sensing that because of money, the relationships are breaking, they form a belief that money makes the family be disrupted. Relationships will break. They're fighting. For example, father is all the time coming and abusing the mother, and you are inside the womb of the mother, and you feel that father is all the time troubling mother because of money.
You're always demanding that you go to your parents' home and bring money. And money breaks hearts, money breaks relationships. This is the limiting belief which is formed. The child is born with that belief. Even sometimes it comes from the family tree, transgenerational. For example, grandfather built successful, he's an industrialist, he built a big empire and is very, very abundant, very prosperous, but he lost everything, for example. What happens in next generations, father and now the son or daughter, they follow the footsteps of the grandfather because we are very loyal to our parents and grandparents, our ancestors. We have a belief, how could I succeed when my grandfather failed, lost everything? I can be more greater, more successful than my parent, my grandfather. This is called blind loyalty. It's called blind love. There is something called in meditation path that enlightened love, which says that even though my grandfather, my great-grandfather failed and lost everything, I become greater than them. I become happier than them. I'll be more successful than them. This is called enlightened love. The change of beliefs that happen. Sometimes the beliefs are coming from the past lives. Many lifetimes, we carry them like a baggage. Not only emotional baggage, we carry the mental baggage where all these beliefs, we carry them. Limiting thoughts and limiting beliefs about spirituality, about life, about health, about sexuality, about relationships, about money. And we have so many limiting beliefs. Unless someone is able to really transform them, they keep creating limited realities. Very, very constricting, restricting realities. ये जो गलत सोच, गलत विचार, इसकी वजह से हम हमारे लाइफ में ये जो पेन, सफरिंग, सब कुछ, लैक, सब कुछ हम महसूस करते हैं. यू जस्ट लुक एट द नेचर. प्रकृति को आप देखिए, कितना अबंडेंट है. सब कुछ अबंडेंट है प्रकृति में, और हम भी प्रकृति में एक भाग है. तो हमारा जो मूल प्रकृति भी अबंडेंट ही होना चाहिए. बट बिना बिलीफ सिस्टम के हम जीवन कैसे जी सकते हैं? इसीलिए सही सोच, सही विचार. And that education should be given to children. That wisdom need to be given to our children or anybody. So this आध्यात्मिक ज्ञान जो है, इससे ही हमें वो जो सही विचार, सही सोच, सही भावना, सब कुछ हम जान सकते हैं. अगर मैं ध्यान के द्वारा ध्यान कर रही हूँ, ये ऊर्जा पा रही हूँ, अपने बिलीव्स पे भी काम करती हूँ जहाँ पर भी मेरी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बट मेरे आसपास में जो एनवायरनमेंट है, मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ या कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी इन जनरल आपको बिलीव्स थोपता रहता है कि आप कुछ कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप एक फीमेल हो या मेल हो, आप ये कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपका कास्ट ऐसा है, आपका अफिलिएशन ऐसा है. तो कुछ ना कुछ तरीके से आपको बिलीफ सिस्टम थोपा जाता है. तो कैसे हम अगर मेडिटेशन करते भी हैं बट बिलीफ तो आसपास है, पीपल, हाउ डू यू ब्रेक फ्री? बिकॉज बिलीफ सिस्टम इज व्हाट थॉट्स आर ऑल अराउंड अस. जो भी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, आपके विचार के वजह से, आपका जो गलत विचार है, गलत सोच है, जो भी दिया हुआ है, उसकी वजह से आप अनुभव कर रहे हैं. जब आपका जो बिलीफ सिस्टम्स है आप बदलोगे, तो आपका दुनिया भी बदल जाएगा. तो आप कह रहे हो जो मेरे लाइफ में हो रहा है वो मैंने ही क्रिएट किया है. राइट, डेफिनेटली. तो मैं बैड एक्सपीरियंस क्यों क्रिएट करूँगी? क्योंकि टू लर्न, सीखने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट यू क्रिएट योर रियलिटी. So what does that mean? Because of your beliefs, because of your thoughts, जो कुछ भी है आपके जीवन में आप क्रिएट कर रहे हो. तो अगर आप वो बदल सकते हो, वो जो भी गलत सोच है, गलत विचार है, उसको आप अगर बदल सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका दुनिया में जो भी आप महसूस कर रहे हैं,
अनुभव कर रहे हैं वो भी बदल जाएगा. Beliefs create reality, and we need to have the beliefs which are supporting our evolution. It's not that we need to remove all beliefs. We need to have those limiting beliefs, negative beliefs. Positive beliefs definitely create positive reality. I can do it. I can. That is a very, very positive belief. अगर आपका जो पॉजिटिव बिलीफ है उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं क्रिएट नहीं कर पा रहे तो कुछ प्रॉब्लम है. You have to correct that. You have to look at that. For example, if I'm building a pyramid, a Sahasrara pyramid, which is symbolically representing 1,000-petal lotus and wisdom center. So if I have a belief, it will not manifest so easily, lot of challenges, lot of hurdles will come, definitely I am going to attract such hurdles and obstacles. If I truly believe 100%, that conviction is there and faith is there and belief is there, then the whole universe also manifests that reality and joins your hands to manifest that reality. That's what is the spiritual science talks about. It tells about. One can actually experiment in their own lives, and by changing their beliefs, they change their reality. Even we have beliefs about our health. I will never be all right. I can never cure my illness. They're all negative beliefs. One need to have very positive, open-minded, open-ended kind of beliefs. Those beliefs always can be updated. And that's how we create new realities. We are such masters living in the physical plane who can create our own personal realities. And joining hands with many like-minded people, enlightened beings, we create such enlightened society, enlightened world. It's possible. Wonderful. And that we can do. We are. Yes. We are the soul. Yes. We are that God, like Patriji says. Yes. That's the vision, that how just one man, one individual created crores of masters of like all of us, like you. और कैसे हम अपने आप को वो तत्वमसि हम जाने कि वो हम हैं, ये नहीं है. तो वो बिलीफ सिस्टम तभी तो होगा जब हम बिलीव करते हैं कि हम वहीं से आए हैं. जब हम जानते हैं कि हम वहीं से आए हैं तो वी विल गो देयर ओनली. वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. हम सब भगवान हैं. आप भगवान हैं, डॉक्टर न्यूटन भगवान है, हम सब भगवान हैं. लेकिन हम भगवान की तरह जी पा रहे हैं या नहीं? Right? So that's where we try to evolve, we try to learn, we try to move further, step by step. We look at ourselves. कहाँ पे हम भगवान के जैसे नहीं जी पा रहे हैं? We just learn, we correct ourselves. Check. We evolve, we check. And finally, we connect to that true nature of ours. And that's it, God nature. Wonderful. So, आखिरी सवाल. आप इतने ग्रेट मास्टर्स हैं जो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ आचार्यास, मेडिटेटर्स को आप लेकर आ रहे हैं, उनको और ट्रेन कर रहे हैं. तो आपका क्या लाइफ का पर्पस है? क्या आपने अपना पर्पस ऑफ लाइफ जाना है? क्या आप करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में? Purpose. क्या ये आपका लास्ट लाइफ टाइम है? Actually, not last lifetime, because I feel so interested to come back again. This is Earth plane is so interesting, and this is Bhulok. हम आपसे जरूर देख सकते हैं क्योंकि आपने इतने आपने ऊपर ही घूमते हैं आप आधा समय तो. तब भी आप यहाँ आना चाहते तो सच्ची में कुछ होगा अच्छा. Definitely, this is such a learning platform, and also it's very, very a beautiful world that we are living in. And one is definitely our goal is to have the Brahmagnan. And even though that personal level of basic enlightenment, that experiences, all that is over for us, we could complete that. I know that from my own experience that I'm not this body, I'm the soul. I had that direct experience. But there is something more to it. The enlightenment at the highest peak called Brahmagnan. To know that
I am the old self, old Brahmand. There's no difference between me and the entire collective consciousness. There's one more level, and definitely that's the goal. And whatever that, being a divine instruments, where whatever the best for the welfare of the world, the community around us, and bring as many people as possible into the path of enlightenment. That's our also a purpose. And of course, Quantum Life University is the platform that we created, and it is helping thousands of people already. I don't want to have that tag of great master, because I want to live very ordinarily, because I want to have bel puri. Whenever I want pani puri, I can go and have pani puri. I want to dance, I want to sing. So we want to enjoy every second of our life. We want to live with meaning and purpose. और जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, we want to just spread, touch many lives. Wow. Whatever we have been doing, and we are so happy with this, because it is such a soul satisfying to live your life with authenticity, to grow, to evolve, and we are just enjoying this journey, and finally we'll reach the destination. Wow. Amazing. Thank you. Thank you Thank you. so much. थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपने समय निकाल के यहाँ पे आप पीएमसी हिंदी स्टूडियो आए हैं, हम सभी के साथ समय बिता रहे हैं, सभी के साथ ये विजडम शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज द स्टार्ट टू मेनी मोर। Yes. Thank you. थैंक यू। एंड हम हिंदी पीएमसी वीक्षकों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज के एपिसोड में क्या आपने नोटिस किया आपके अंदर कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं? ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अक्सर ऐसे बिलीफ सिस्टम से जो हम रियलिटी जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम उससे कोसों दूर रह जाते हैं। तो मेडिटेशन से हम ऐसी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वानुभव सेशन विद डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी। ऐसे ही स्वानुभव में हम मिलेंगे इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल से जो हमारे नज़रिए को थोड़ा बदल देते हैं। जब बदलेगा, हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, हम ज़रूर कर सकते हैं। बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।